So let's start a today practice. We were doing yesterday topic of transport. Next topic is challenges. It is very easy and we know we can describe about it easily. So we are going through here from different topics which we find a little bit difficult. I am hope challenges topic will be easy for everyone. So let's see what is the next topic. Okay, we can take the childhood memory topic for today practice for part one. So before seeing the answers, we will go through our practice test with each person. Anyone, sir, do you have this book? Sorry, ma'am, please repeat what you're saying. I'm saying, do you have this book? Satyakub speaking. Yes, I have. All right. Would you like to answer first, or would you like to take my practice test first? Yeah, I can answer first. All right. Then I can ask questions one by one. And then Okay. at the end, we will go through the answers to see which words we can use related to this topic. So, who do you like to play with as a child? Okay. Who I like to play? Actually, I had a lot of friends when I was young, and I would like to play with those friends again. Specifically, I want to highlight my friend Aneeb because we played as a child and we played cricket a lot. So I would love to play with him again. I think in this question, one thing I noticed that I play. I don't know you spoke the past form ed, but it seems you have spoken play, not played. So if you are speaking play with ed, then your ed sound was not clear, and if you're using present form, then you need to use past form of the word. Okay, all right. And another thing, try to in one activity which we have done in previous weeks where we analyzed answer which answers are good, and we have noticed there that those answers in terms of lexical resource are good where the um, candidate is changing different words, like in one answer candidate is using children word again and again, and in another answer children what is replaced by kids toddler. So all these are synonyms. So do you have any synonyms in your mind for friend keyword you can use this? You can say I have a close relationship, my cousin, even if you are talking about in the context of your friends and family. So these are the different ways, and it is better to avoid same idea again and again like friends, because sometimes it brings redundancy in terms of words and different things. So we can change the ideas. I hope so it you understood my point. If you have Yes, still ma'am. questions you can ask. Thank you, ma'am. Where did you go to play as a child? Sorry. Once again, where please. Yeah. where did you go to play as a child? There was a ground near to my house because I have like spent a lot of my time as a young in a village, and now we have shifted in a city, and there was a playground close to my house, and I spent a lot of my time in that ground playing cricket and football. Alright. Do you think it is better for children to grow up in the city or in the countryside? So it is like personal choice of everyone. Some prefer to stay in cities, and some prefer countryside area. But if I have to choose from like I have to choose one option, then I will definitely go with countryside area because here you will find a fresh air as compared to um, like dirty air in the city, and lot of other options are available in village because most people who choose city are because of the facilities, but nowadays
facilities are also available in the villages as well. So I would choose village. Okay, what point I did not understood you said cities are available in the village. Are you talking about facilities, amenities, or you're talking how what is mean like cities are available in village? If you say So city facilities uh, are available, then it should be right. But I did not understand your context. Can you elaborate it more? yeah, I said facilities. I think due to like internet issue, you heard city. All right, then yeah, it is okay. Okay, let's move to the next question. What are your best childhood memories? Okay. There are a lot of memories I can still remember from my young age. Specifically, we played a lot of cricket. And when I was in my school back then, I have won a lot of competitions, and I was the one who always got first position. So these are some of the memories I like. It fascinates me all the time whenever I think about these memories. Yeah. Okay, it fascinates me when I am think about it. Can you explain it more about how it fascinates you? Okay, because like whenever I think about them, uh, I become happy. A lot of the time when uh, time does not go well in your life and you are depressed, then you have something that you can enjoy in yourself. So this is the thing that whenever I think about those moments, and then I feel motivated. I feel motivating, and I feel good. Yeah, yes, it is better. I think there was a word choice error. You or you can restructure your sentence instead of saying it fascinates me. You can say, I am. Even you can say, no, I am proud of my uh, achievements which I had gained in my childhood. Like I have won a lot of competition. You can say I can relieve. I can get relief from my stress if I recall all those memories. So these memories have a very positive role in my life. So there are many ways. I think if you structure in better way, it would will be helpful. I don't have find flavors in overall. I think are there any more questions? So you can ask me questions. Would love Okay, to answer. let me ask further question. Then I will give you feedback at the end of part one test. Did you enjoy your childhood? Definitely, I have enjoyed my childhood because of the lot of memories and lot of enjoyment and enthusiasm that I had back then. Moreover, childhood is a like age I think everyone enjoy in their life because there's not a lot of stress. You don't have a lot of responsibilities and you don't have a lot of tasks that you have to complete on time and lot of the things. I think you understand what I'm trying to say. And moreover, my childhood is really special for me because of lot of like achievements I have, as I have described earlier. Due to a lot of achievement, I think I have a pretty good and pretty enjoyable childhood. What did you enjoy doing as a child? Okay, and like playing with my friends and winning the competitions. Like I can still remember the time when I was only one student in my whole school who got scholarship in the eighth grade. And this was a moment of pride for me and pride for my school as well. And moreover, the way the school celebrated this achievement was very special for me. The whole school gathered at a point and they celebrated this wonderful achievement of mine. So these small things, it looks small, but these moments are very special for me. So this is really enjoyable for me. All right. So, what did you enjoy doing as a child?
I enjoyed. I think I have like described earlier the achievements and some moments with my friends because nowadays a lot of my friends are not in this country. They have moved abroad, and a lot of friends are doing job, and we cannot hang up like before. So the memories of friends and some moments that we have spent together, these things make a person happy, and these are like moments where we can feel like proud of those moments. Yeah. Alright, so this is end of your part one test. Let's move to the feedback part. But what do you think about your performance? Like, and my another question is how long you have been doing practice for this module? Okay, I am like practicing for a pretty long time, but today I was not up to the mark because I was not mentally prepared to answer the questions. And the issue, the thing that I lacked is structuring the idea. I don't know what I'm going to speak in my next sentence, but I'm still keep talking. So if I structure my ideas really well, then I can do better, more better than this. Yeah, you can please go ahead and give me feedbacks. Yeah, coherence. Yeah, coherence is the one thing which I also noticed because it was lagging in your speaking. For fluency part, I didn't notice filler words. They were just might be occasionally. Most of the time, I didn't notice it. So fluency was okay. Pronunciation was okay. I think you need to work based on part one performance. You need to work lexical source. I think there are a lot of enjoyment synonyms which you can use. I enjoyed even in the one class we have discussed that if we don't know the synonym of word, we can use different parts of speech of the same word like enjoy, enjoyment, enjoyed, enjoyable. Even if you don't have synonyms, so you can use different parts of speech in different words. And sometimes you are using like I prefer for this, and some would like to prefer for city, and some prefer to like to live in countryside. So you can say some prefer this and other like this. You can bring range of words, you know. And another thing that you mentioned, you were saying in the last few question I have achieved, you need to say I had. And one thing, my friends have moved, you can say my friends moved abroad, so that's the reason I'm unable to maintain contact with other, like I'm not able to keep in contact with them. So these are the different words. I think there were certain issues like you can say your speech was not looking that you are speaking naturally. Sentence structures need some sentences need to be restructured. So these are the thing in terms of coherence. And let me think about the. Okay, I was not able to pay much attention to grammatical accuracy. However, the points which I have mentioned, I hope so it will be helpful for air and how we can bring variation, like how we can improve our lexical resource. So that's the reason I am following this book. And after giving the test, I usually highlight some words which are related to this. But I think you will take when we will finish our practice test. After that, we will highlight some words which can help us. But just highlighting different words are not necessary. We need to go through different words to use in different contexts. Like if I talk about in today words, like when we are talking about countryside, we can even we know the word, but sometimes we are unable to use it despite the fact that we have synonyms. Like rural is the another word for countryside, and I pleasure, I entertain myself. Entertainment is another word we can use in this context, in the context of enjoyment. So there are so many different words, even we know, but we need to pay a little bit attention to it. But your fluency was okay, and I don't find some filler words like hesitation and self-correction. There are certain areas were good,
but in certain areas you need to work on it. Yeah, thank you so much, ma'am. As I said, I was not like mentally prepared to answer this question, so this was the reason I was lacking in coherence and structuring my ideas. Yeah, so it was really helpful for me. Yeah, mentally not prepared. I did not contact your context. Are you saying that topic was unknown to you? No, no, like when I joined the class, I was just expecting to listen, but suddenly I have to speak. So this was the like sudden reaction that All this. right. Okay. Sir Zafar has joined us. Welcome, sir, in our session. थैंक यू जी। एक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी साथी को क्वेश्चन फॉर मी? कोई फीडबैक, एनीथिंग वी कैन हेल्प यू गाइस विद? सर मुझे ऐड करना था लाइक जिस तरह आपने बताया है कि हम अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, आहिस्ता से स्लो से ज़रा जोर नहीं लगाना, जितना बस कर सकते हो वो करना है। तो ये जो टेक्निक है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है, और मैं सिर्फ इसको टाइपिंग में नहीं और भी दूसरी चीज़ें सीखने में लगा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे बस आपको थैंक यू करना था। वेलकम जनाब। देखें, जो लोग ज़्यादा जोर नहीं लगाते और सिर्फ कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो उनका सक्सेस रेट उतना ही होता जितना ह्यूमन का चलने में है, कि तकरीबन सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो यूनिवर्सिटी के तरीके से चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, उनका सक्सेस रेट उतना ही है जितना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का अच्छी जॉब लेने के लिए है। तो ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ने इस काबिल बनाया हुआ है कि ये ज़िंदगी का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है, अगर इसे उसी तरीके से किया जाए जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ने बनाया हुआ है। जी, किसी और साथी का? तो ये अली साहब, ये जो साथी नए हैं वो हमारी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, वो देख लें, तो उनमें ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की गई हैं। बोरिंग टॉक्स हैं, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ओके सर, मैं चैट में शेयर कर देती हूँ। जी, किसी और साथी हो कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, हमें कितना टाइम लगता है लाइक टाइपिंग स्पीड को 100 वर्ड पर मिनट रीच करने तक? जितना टाइम आपको चलना सीखने में लगा था। सही है, यानी कि हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली 2-3 महीने में हो जाता है, अगर आप रोजाना कर रहे हैं तो। सर मेरी टाइपिंग स्पीड उस तरह से इम्प्रूव नहीं हुई, लाइक मैंने तो काफी टाइम से शुरू किया है। तो आप रोजाना टाइपिंग करती हैं? जी, हाफ एन आवर। तो बस करती रहे। सही है, क्योंकि वो फिंगर्स के मसल जनरेट होने होते हैं नए। हाई स्पीड टाइपिंग के लिए फिंगर के मसल्स डिफरेंट होते हैं, वो होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम तेज टाइपिंग नहीं करते। तो जब आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आस्ता आस्ता बनना शुरू होते हैं, हाँ सर। और फिर एकदम जंप लगता है। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? Participant, you can unmute yourself and can ask question from Dr. Zafar Shaikh. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलें।
सर मेरा ये क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली मैंने एक अपना आर्टिकल लिखा, लाइक डीएसए के बारे में था। तो मैंने वो मीडियम पे पब्लिश किया, तो ना मुझे एक सीनियर मॉडरेटर ने कहा कि मीडियम पे कम लोग इसको देखते हैं, आपको ये लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहिए। सो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट किया करूँ या मीडियम पे पोस्ट किया करूँ? बस ये मैंने पूछना था, एक छोटी सी बात थी बस। जहाँ दिल करता है पोस्ट करें, दोनों जगहों पे कर दें पोस्ट। ओके ठीक है, दोनों पे कर देता हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके। सही है, लेकिन आर्टिकल में ना आधा पौना घंटा से ज्यादा ना लगाया करें। आर्टिकल लिखने में ठीक हो गया सर। सही है, आर्टिकल आर्टिकल लिखना तो उसके ज्यादा बाद अच्छा नहीं लिखना, आर्टिकल उसी तरह लिखना जिस तरह आप जल्दी से लिख सकते हैं। बजाय ओके इसकी सर। कि आप 10 घंटे में एक अच्छा आर्टिकल लिखें जो कि 10 घंटे में बड़ी मुश्किल से लिखा जाता है, उससे बेहतर है कि आप 10 घंटे में 10 आर्टिकल लिख लें और हर आर्टिकल को 1 घंटा दें। ठीक हो गया। सही है, यानी कि आर्टिकल की लेंथ छोटी रखें, 1-2 पैराग्राफ हों और उसमें अपनी बात कर दें और 15-20 मिनट में पोस्ट कर दिए करें। सही। सही है। सर जो अभी मैंने आर्टिकल लिखा है उसकी रीडिंग लेंथ 5 मिनट्स है, तो आई गेस वो थोड़ा सा लंबा होगा इस तरह ना, तो मैं छोटे छोटे लिखता हूँ फिर। यार ये जो आप मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या आपने जब चलना सीखा था तो आपने ये डिस्कशन किसी से की थी कि मैं पक्की सड़क पे चलना शुरू करूं या कच्ची पे चलना शुरू करूं? भाई जिससे चलना आ जाता है वो दोनों पे सीख लेता है। मेन चीज है कंसिस्टेंसी। सही है, यस सर। तो वो आप हफ्ते में 1 दफा लिखते जाएं तो यहाँ डेली कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उतना करें जितना आप अगले 10 साल कर सकते हैं। सही है। जो 99% लोग फेल हो जाते हैं ना, वो इस तरह करते हैं, वो 1-2 बड़े अच्छे आर्टिकल लिखते हैं और उसके बाद उनमें हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि उन्होंने टाइम ज्यादा लगा दिया होता है। ठीक है। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? सर चैट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कैन यू गाइड मी व्हाट आई डू? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BSIT 6th सेमेस्टर। जी, ये जो ऊपर 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स है ना, ये आपके लिए हैं। तो इन समरी आपने पिछले 3 साल जाया कर दिए, कोशिश करें कि अगला 1 साल जाया ना हो। तो वो आप टॉक्स सुनेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर जी अस्सलामुअलैकुम। जी आर्टिकल की बात हो रही थी तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आर्टिकल लिखना कितना ज़रूरी है। वैसे मैंने अभी तक कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा। आर्टिकल लिखना बेहतर होता है, फायदा होता है थोड़ा बहुत। तो मसलन आप हैकाथन में जाएं तो उसका लाजमी आर्टिकल लिखें, स्टोरी लिखें उसके बारे में, वैसे लिखते रहें। तो मसलन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके पास एक एआई का मॉडल है बड़ा ज़बरदस्त और आपने उससे बिल्ली डिटेक्ट करवानी है, तो क्या ये ज़रूरी है कि बिल्ली के डाटा सेट पे से ट्रेन किया जाए या ट्रेन किए बगैर ही कहीं बिल्ली डिटेक्ट करे? डाटा सेट आपका तो आवाज़ नहीं आई आप? सर उस हिसाब से उस मॉडल को ट्रेन करेंगे तो वो फिर हाँ, ट्रेन करेंगे बिल्कुल। तो जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये भी एक खाली एआई का मॉडल है। तो अगर आपने कभी लिखा ही नहीं है तो जिस दिन लिखना पड़ गया ना उस दिन आप फेल हो जाएंगे। जी मसलन प्रोफेसर ने कह दिया कोई चीज़ लिखो, आपसे नहीं लिखी जाएगी क्योंकि मॉडल ट्रेन ही नहीं है। प्रोफेसर के कहा ईमेल करो, आपसे नहीं लिखी जाएगी। प्रोफेसर का रिसर्च पेपर लिखो, आपसे नहीं लिखा जाएगा। यस सर आई गॉट। राइट, तो जो काम अपने ब्रेन ने किया नहीं, ब्रेन उस चीज़ के लिए ट्रेन ही नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, मैं समझ गई। फिर तो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, अगर इससे नीचे ना तो आप बिलो एवरेज है। नहीं सर, मेरी वैसे 70 वाली लाइन में जा रही है, मैं करती हूँ प्रैक्टिस। जबरदस्त। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? सर चैट में एक और क्वेश्चन है,
आपने कहा था कि हैकाथॉन ज्वाइन करनी है, लेकिन हैकाथॉन में वो लोग प्रोफेशनल का कहते हैं टीम बनाने के लिए, तो फिर क्या अभी हम किसी भी हैकाथॉन को नहीं ज्वाइन कर सकते? भाई देखें, दो तरीके हैं, या तो आप प्रोफेशनल बन जाए फिर हैकाथॉन में जाए, और पूरा पाकिस्तान 10-12 करोड़ यूथ जो है, पूरी दुनिया के लोग, वो इसी तरीके से हैकाथॉन में जाते हैं, दूसरे अल्फाज में जाते ही नहीं है। जिस दिन आपको काम आ गया, प्रोफेशनल हो गए, उस दिन तो आप गूगल में नौकरी करोगे, उस दिन हैकाथॉन में थोड़ी जाओगे। हैकाथॉन में दुनिया जाती हुई काम सीख के, लेकिन हम हैकाथॉन में जाते हैं काम सीखने के लिए। तो कोई टीम में आपको नहीं रख रहा तो अपना प्रोजेक्ट बना लो, अपनी टीम बना लो, अपना प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो, और हर महीने ये काम करो जब तक कि आपको काम ना आ जाए। दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि क्या आपने पहले चलना सीखा था और चलना शुरू किया था, या चलना शुरू कर दिया था तो आस्ता आस्ता चलना आया था? तो भैया आपने चलना शुरू कर दिया था तो आस्ता आस्ता चलना आया था। हैकाथॉन में जाना शुरू करेंगे तो आस्ता आस्ता आएगा, और शुरू में ऑब्वियसली गिरेंगे, ठोकरें लगेंगी, बेइज्जती होगी, दैट इज पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इसी तरह आपको ऐसा नहीं था कि आपको बोलना आ गया था फिर आपने बोलना शुरू किया था, आपने बोलने की कोशिश शुरू कर दी थी तो 6 महीने बाद बोलना आया था। तो इसलिए हैकाथॉन में जाएं। हैकाथॉन में जाते हैं आप, इंटरनेशनल लोगों से बात करते हैं, टीम बनाते हैं, ये सारी लर्निंग, ये सारा कुछ लर्निंग का हिस्सा है। एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग। जी किसी और क्वेश्चन? किसी और की कोई फीडबैक? तो चलें जी, लेट्स गो बैक टू द सेशन। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप में से नाकाम सिर्फ वो लोग होंगे जो कि हाईकोर्ट गुरु पे आना बंद कर देंगे। जो रेगुलर रहते हैं वो अलग फजल का सारे कामयाब हो जाते हैं। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। है तो ये इररिलेवेंट है। पूछना मैं ये चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ज्यादातर जो स्कोप है वो ज्यादा लोग जो कर रहे हैं वो एआई के पीछे भाग रहे हैं, लाइक जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जनरेटिव एआई में अब काम हो चुका है। अब मैं इवन के एजेंट्स का मैं सुन रहा था कि एजेंट्स फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक तो एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक डॉक्टर चाहिए। एजेंट क्या करेगा, एजेंट को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दे दी, एजेंट क्या करेगा, वेबसाइट पे जाएगा, उसको सर्च करेगा, जिस रेंज रेंज का मुझे डॉक्टर चाहिए उसकी जाकर फॉर्म भी इसका फिल कर देगा, अपॉइंटमेंट वगैरह भी फिल अच्छा, कर देगा। तो मैं पूछना चाह रहा था कि एजेंट्स बाकी ही फ्यूचर होंगे कि, और हम उस चीज को लर्न तब करते हैं जब वो चीज पुरानी हो जाती है? ये मैं पूछना चाह रहा था। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मेरा जवाब ये है कि क्या आप वो इंजीनियर बनना चाहते हैं जो महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, या हम वो इंजीनियर बनना चाहते हैं जो महीने का 1 करोड़ कमाता है? तो मैं जस्ट ना पूछना चाह रहा था ये ना बात, वैसे मैं कर वैसे मैं डीएसए मैं भी रहा हूँ। मैंने भी आपसे एक बात पूछी, मेरा जवाब दे देना, सही जवाब दें। आप एक 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं महीने का 1 करोड़, तो 1 करोड़ कौन सी कंपनियां देती हैं? बैंक। फैंग। तो फैंग के इंटरव्यू की तैयारी करें। जिसमें जो बंदा पुलिस में जिसने पुलिस में आईजी पुलिस बनना होता है ना, वो ये नहीं तैयारी करता कि आईजी पुलिस आजकल क्या कर रहा है, फोन किस तरह का यूज करता है, ठीक है, दिन में मीटिंग कितनी करता है, वो सीएसएस की तैयारी करता है। तो भैया आप इंटरव्यू की तैयारी करें, आप गलत चीज के पीछे पड़े हुए। आपको ये पता होना चाहिए फैंग का इंटरव्यू कैसे है और वो होता कैसे है।
तो उसके लिए जो मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं वो सुन लेता, वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही है जी। किसी और साथी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, पहले तो मैं जस्ट एक इवेंट सा वो शेयर करना चाह रहा था सर। मैं अभी जीकी से मास्टर्स कर रहा हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेम्बर। तो सर आपने ही रोड मैप दिया था एंड सो उसके बाद एडमिशन हो गया। तो मेरे सर एक टीचर हैं डॉक्टर मसरूर, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो मुझसे अक्सर इस तरह कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट शुरू करो या एलएलएम पे काम करो। तो मैं उनको हमेशा मना करता था। तो लास्ट टाइम अभी पिछले क्लास में उन्होंने मुझे कह ही दिया ना कि तुम्हारा क्या सीन है, तुम प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं ये कर रहे। तो मैंने कहा सर कि मेरे मेंटोर जो हैं वो और है जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो अभी मेरे रोड मैप जो इस हिसाब से नहीं है। तो मैंने उनसे कह दिया कि मतलब इस तरह डॉक्टर जफर हैं फ्रॉम सिलिकॉन वैली, और आई कोड गुरु जो है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो आई वॉज अमेज्ड कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी आई कोड गुरु का हिस्सा हूँ। उन्होंने लिटरली फ़ोन में व्हाट्सएप निकाल के मुझे आई कोड गुरु का जो है वो ग्रुप दिखाया। देन आई गॉट टू नो कि जो मेरे प्रोफेसर हैं उन्होंने भी आई कोड गुरु पे एक टॉक वो ऑलरेडी दे चुके हैं आईसीपीसी से रिलेटेड, जो कि बेसिकली आईसीपीसी को वो हेड करते हैं जीकी में, डॉक्टर मसूद। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वो फिर मैंने बाद में उनकी वो आईसीपीसी का वो भी देखा टॉक जो है। तो आई वाज रियली अमेज्ड कि मतलब मुझे पता भी नहीं था कि अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ आई कोड गुरु ऑलरेडी जो है उसमें मतलब मेरे से काफ़ी पहले इंटर हो चुका है। और लाइक सो इट वाज वेरी एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैंने सर से मतलब इस पे और भी डिस्कशन की। खैर ये तो मैं जस्ट आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी जीकी में जो एनवायरनमेंट है वो मतलब रिसर्च से प्योरली उस साइड पे है, एंड वो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपको इसके बगैर नहीं छोड़ते, आपने रिसर्च करना ही करना है। अब आई नो जो यूएस के लिए हमारा रोड मैप है उसमें रिसर्च इज़ नॉट मैंडेटरी और समथिंग, मतलब वो हमारा रोड मैप डिफरेंट है जो आई कोड गुरु पे हम फॉलो करते हैं। लेकिन सर अगर अब मैंने ये चीज़ करना ही है तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि मैं किस साइड पे जाऊं। मैं मतलब क्या करूं, क्यों अभी मैं स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में भी अप्लाई कर चुका हूं, उसमें भी मैं सेक्शन लीडर हूं। सो मैं वो चीज़ भी कर रहा हूं। मुझे जितना टाइम मिलता है तो मतलब मैं उसमें पार्टिसिपेट करता ये हूँ जो देखें ना, हमारे आई कोड अभी ग्रुप अभी टीचर्स मैं होती आपको हैं। बताता हूँ कि जी जी क्या कहते हैं। अभी आज मेरी आई कोड गुरु पे केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, वो ना अभी रिव्यू पेपर लिख रही हैं जी जी। जर्नल के लिए कि यूज़ ऑफ एआई इन केमिस्ट्री। तो वो ढूंढ रहे हैं किसी बंदे को जिसे सॉफ्टवेयर आती है, जो सॉफ्टवेयर का बंदा हो, तो आप उनके साथ मिलकर पेपर लिख लें। यूज ऑफ एआई इन प्लांट जेनेटिक्स, यूज ऑफ एआई इन जोलॉजी। अभी जिस तरह हमारे आई कोड ग्रुप पे 4-5 डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर वो पेशेंट्स के डाटा पे एआई के मॉडल लगा रहे हैं, तो आपको बेशुमार आइडियाज मिल सकते हैं यहाँ पे। सर एक्चुअली इसमें डिफरेंट एरियाज हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या एनवायरनमेंट हो गया। तो सर उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज़ पे, लाइक एट द एंड मेरा जो गोल है वो यूएस ही है कि मास्टर्स के बाद मैं हाँ तो पीएचडी इसके लिए उसके फिर लिए अप्लाई पेपर करूँ। फिर सो वो वाला पेपर काम करें जिसपे जोर कम लगे। सर सही है। मुझे बस सिर्फ एक ये डर है कि ये ना आइडिया ऐसा हो कि मुझे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिले, या मतलब कि मेरे लिए डोर्स ओपन हो जो इंटरनेशनली, हम लाइक कि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम ना करूं जिसकी कोई वर्थ ना हो, या किसी ऐसे एरिया में। मुश्किल प्रोजेक्ट पे काम ना करें जो आपका जीपीए इम्पैक्ट करे या जो आपको लीड कोड ना करने दे। यस सर। ये 2 चीज़ सही है। सर बाकी वैसे किसी भी एरिया में वो हो, लाइक हाँ जस्ट बिल्कुल मतलब बिल्कुल एआईएमएल और बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके सर। एंड सर बस इसमें मैं एक पेपर पब्लिश कर दूं क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो मतलब इट्स बिल्कुल ओके फॉर ज़बरदस्त। मी अगर मैं साथ में कर तो सकता हूँ। आई कोड गुरु को ऐसे कोई फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे? ये सर वो मेरी डॉक्टर मसूद से भी इस पे डिस्कशन हुई थी। मैं अपने क्लासमेट्स को मैं जितना वो कर सकता हूँ, बट सर अभी वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर ये कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है इसकी तरफ मतलब वो हैं जो कुछ वहाँ पे इवेंट्स होती हैं जिस तरह आईसीपीसी हो गया, या उनके बाकी जो अपने यूनिवर्सिटी में हैकाथॉन्स वगैरह ये लोग जीकी में करते हैं। सो उनका फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा है। सो लाइक उनका
उनका थोड़ा सा डिफरेंट हो बिल्कुल जाता है कि उनके अपने इंटरनल वो है, तो उस वजह से। बट जो मेरे अपने कोलीग्स हैं तो मैं आई डू शेयर इट विद देम, मतलब लेकिन वहाँ ठीक पे है मैंने ना, अभी तक 100 टाइपिंग स्पीड वाला कोई बंदा नहीं देखा। सही सही, बिल्कुल, तो आपको सो एडवांटेज होगा इन चीज़ों का। यस सर, बहुत या यस सर, थैंक यू। सही, एनीथिंग एल्स? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी, सर। मास्टर या पीएचडी अप्लाई करने से पहले कितना लीड कोड होना चाहिए? लाइक कितना कैसा आना चाहिए? अभी मैं आपको सर अपनी बताती हूँ कि मैंने वो टॉक सुनी थी, उसके बाद मैंने ना 200 कर ली हैं प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ लेकिन तो आपने जी प्रेजेंट कितने किए हैं क्लास में? सर 7-8 प्रेजेंट किए होंगे और 2 मैं कोर्सेज करवा रही कोर्सेज में। कितने प्रेजेंट किए हैं? 7-8 बस प्रेजेंट किए हैं। हाँ तो इसका मतलब आप 0 पे बैठे हैं, कम से कम 50-60 प्रेजेंट करें क्लास में। सर एक और सही, क्वेश्चन था, ये जो मैंने 200 किए हैं ना सर, इसमें मोस्टली इस तरह थे कि मैं उनमें बहुत ज्यादा स्टक हो जाती थी और फिर मैं पूरा उससे रिलेटेड एल्गोरिदम देखती थी और चैट जीपीटी के साथ करके ड्राई रन वगैरह करके करती थी, लेकिन मैं खुद से बहुत कम किए हैं। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अभी अप्लाई करूं या नहीं नहीं डिफरेंट अप्लाई यूनिवर्सिटीज में? करती अभी जाएं, मैं आप अप्लाई जी करती जाएं और हर गुजरते दिन के साथ आपकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। अप्लाई भी करती जाएं और साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करती जाएं। और सर एक और क्वेश्चन था सर, मेरा मास्टर्स यहाँ पे हुआ हुआ है कंप्लीट, तो मुझे पीएचडी में अप्लाई करना चाहिए ना? और उसमें सर ये एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि जब हम पीएचडी में करते हैं अप्लाई, तो अगर मुझे 2 इयर्स के बाद मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो क्या मैं उसे 2 इयर्स के बाद छोड़ सकती हूँ? अगर फुल स्कॉलरशिप पे भी गए हो तो वो अलाउ कर देते हैं कि आप ये 2 इयर्स के बाद अपनी जॉब परस्यू कर लेंगे? जी, जो अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो हर साल रिन्यू होता है, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था सर। सर सारिम के साथ ना मेरी डिस्कशन हुई थी, तो मैंने उनके साथ अपनी प्रोफाइल वगैरह शेयर की, तो उन्होंने कहा कि आपकी पोटेंशियल प्रोफाइल है, आप O1 वीज़ा पे अगर थोड़ा सा काम कर लेना तो आपका ये वो भी हो जाएगा। तो सर मुझे आपसे ये भी पूछना था कि अभी मुझे F1 पे ही करना चाहिए, क्योंकि मेरी 1-2 रिक्वायरमेंट्स वो कह रहे थे कि अगर आप कर लेना तो आपका O1 भी हो जाएगा। तो मुझे इस सिलसिले में भी आपसे बात करनी थी कि आप क्या ये सजेस्ट। डिसीजन आप ये डिसीजन आप खुद करें। मैं अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं दोनों में ट्राई करूंगा, जो पहले मिल जाएगा उस पर चला जाऊंगा। ठीक है सर, मैं समझ गई। मतलब अगर मुझे O1 भी पहले मिल जाता है तो उस केस में मैं सिर्फ जॉब के लिए O1 कर लूँ, अपना लीड कोड अच्छे से प्रिपेयर करके फिर फैंग वगैरह में अप्लाई जी कर बिल्कुल बिल्कुल। लूँ। एम आई राइट? जी सही हो गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और सर मुझे एक फीडबैक देना है, वो जी यही है फीडबैक सर। मतलब वर्ड से नहीं एक्सप्लेन हो सकता, थैंक यू बोल के नहीं एक्सप्लेन हो सकता, बट सर जो आप कर रहे हैं ना इसका आपको अजर अल्लाह ही दे सकता है, हम लोग तो नहीं दे नहीं सकते, बट यू आर आप डूइंग भी थैंक यू ग्रेट कर सर। सकती हैं, आप भी थैंक यू कर सर सकती हैं वो थैंक यू वाला प्रैक्टिकली। लफ्ज मुझे छोटा लगता है नहीं एक्चुअली। नहीं, आप प्रैक्टिकली थैंक यू करें अमेरिका आके। ठीक है सर, डन ठीक है, इंशाल्लाह। गूगल ज्वाइन करें फिर मुझे बुलाएं कॉफी पे, इंशाल्लाह सर, है ना? इंशाल्लाह, यस इंशाल्लाह। तो वो जो है तो वो हमारा थैंक यू हो जाएगा। जी डन सर, इंशाल्लाह। तो किसी और साथी का क्वेश्चन? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। सर यहाँ पे जीके में ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेसर अच्छे हैं, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई कोई चीज़ देखनी चाहिए किसी पैरामीटर पे कि सुपरवाइजर कैसे टीचर को चूज किया जाए? और सर बिल्कुल, मैं इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ जी, सुपरवाइजर उसको लें जो कि अच्छे नंबर देता हो। ओके सर। पढ़ा सर लिखा होना बाकी उसका जरूरी नहीं रिसर्च है, एरिया या कोई कोई फर्क नहीं पब्लिकेशंस पड़ता, नंबर या कोई सब? फर्क नहीं पड़ता। सही है। ओके सर। आपके सीवी में रिसर्च का जो है ना सीजीपीए मैटर करता है कि उसने आपको स्कोर कितना दिया, दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट। बाद में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा पढ़ा लिखना चाहिए जो बाद में सी ग्रेड दे दे कि तुम्हें कुछ आता नहीं था। यस सर। तो वी हैव टू बी केयरफुल। यस।
सही सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी, किसी और साथी का कोई फीडबैक? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। सर मैंने ना क्या कहते हैं इस बार समर में मेरा 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे जून में। तो मैंने आइट्स देना है, जैसे कि आपने गाइड किया हुआ है कि 6 के बाद देना है आपने। तो मुझे ये पूछना था कि आइट्स के बाद जब अप्लाई करने के लिए स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, थोड़ी सी आप अगर गाइड कर दें कि उस हवाले से किस तरह चीज़ों को देखना है। अगर मैं अपनी करंट प्रोफाइल के बारे में बताऊँ आपको, तो मैं आईकोड गुरु के साथ 1 साल से हूँ। तो इस अर्से में मैंने कोई ऑलमोस्ट 6 to 7 सेशंस को भी क्या कहते हैं मॉडरेट किया है, ट्रेनर भी रहा हूँ। और लीड कोड के 150 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट होने वाले हैं, जिसमें से मैंने कोई आप 40 मॉडरेटर 50 ग्रुप में हैं? मॉडरेटर ग्रुप में सर। नहीं है उधर आप? नहीं सर कोई। तो वो मॉडरेटर का आपको उधर ऐड कर दे, तो वो जब आप आइल्स के बाद बताएंगे आपको। फिलहाल आपका गोल है जिंदगी और मौत का, जो आपका मसला है वो ये आइल्स में बेहतरीन स्कोर लेना। ओके, तो यानी कि तो मैं आप अभी सब चीज़ें छोड़ दूँ और आइट्स पर फोकस करूँ एग्ज़ाम जी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में मेरी एक टॉक भी है जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि जब आइल्स कर रहे हो तो जिंदगी के सारे काम छोड़ दें, या आइल्स की तैयारी करें या नींद पूरी करें, बस। और जो तब स्कोर आपकी बेहतर जीआरई है। वाली टॉक थी, ऐसी ना हाँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने देखी थी। ज़बरदस्त। तो बस आप इंशाल्लाह तैयार हैं जी। ओके सर, ओके, थैंक यू ज़बरदस्त। सो मच सर। वेलकम। जी, किसी और साथी क्वेश्चन? कोई आपकी ऑब्जर्वेशन, कोई फीडबैक, कोई चीज़ जो आपको लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं? चलें जी फिर, लेट्स गो बैक टू द सेशन। ग्रेट वर्क, कीप इट अप। तो आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मॉडरेटर्स ने। कोड इन प्लेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, हार्वर्ड में भी अच्छी रही। तो कीप इट अप, थैंक यू। कंटिन्यू करें सेशन। थैंक यू सो Thank मच सर। थैंक यू। thank you so अगर आप बोल रही हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yes, I was speaking, but my mic was muted. Let me say it again. I was saying, we were doing part one practice, and Sir Asif answered, and I have gave him feedback. Anyone who would like to answer for part one questions, who would like to do practice? Okay, anyone who would like to take my test? Anyone who would like to either give practices or would like to take my test?
My voice is clear now. Yes, ma'am, your voice is clear. All right. Can you start my practice test? If no one is willing to give answers, but I would say if you are preparing for this exam, you must try your best. Either your answers are good or not, because when we start, we are at beginner level and we can't expect from ourselves like we should answer like a expert. Sir, Asan, you can take my speaking practice test then. Okay, ma'am. Ma'am, there's a little background noise in my side. If anyone else is willing to take your test, otherwise I have to change my location. If anyone would like to ask question for me, you can unmute yourself and can ask question. By the way, can you answer how many of you are preparing for this exam? You can raise your hand if you want to appear for this exam in the near future. No one is going to take this exam. Alright, sir. You can take my practice test. We have few minutes. In the meanwhile time, we can finish this practice Yes, test. ma'am. Okay, I'm going to ask you some questions. Yeah, I'm opening the entire question. You can ask 3 to 4 questions among all. I will not rush the answer. Okay, that's great. So first of all, let's talk about teachers. Do you want to be a teacher in the future? No, I do not have any plan to become a professor after completing my post-graduation studies because I have a dream to work as a software engineer in big tech companies. That's great. So do you have a teacher from your past that you still remember? Yes, in a few years back, I have worked as a teacher in my near school where I taught computer-related subjects, and this was my social work besides having my undergrad degree, and it was compulsory when I was doing my university degree. Okay. Okay. Are you still in contact with your primary school teachers? Not yet because I completed my early years of schooling from my hometown. So now I have been shifted into another city. So it is very difficult to remain in touch with them. Even you can say it is impossible as I did not remember from where they belong. Either they are still working there or got retirement from these schools. Right. So in what way have your favorite teacher helped you? There are many ways, but the one which I remember, they taught computer science subject very well, which sparked my interest to pursue my undergrad degree in this field. So I think this was the most influential impact on me. Hmm. So this is the last question of first part. Do you have a favorite teacher? Yes, I have a lot of favorite teachers, not one. So even in my university life, there were also many of them, and one of them was very cooperative and have very and always explain difficult concept easily. So that's the reason I like that teacher most. And that professor was my supervisor also, so she guided me very well in different parts of my research. Okay. So this is the end of first part. Do you want to judge your own self where you did good job and where were some lacking?
I still try to use some vocab, but still in certain areas I think I can use it. Apart from that, principles okay. Like in 1 or 2 times I was stuck in one person. I think I don't know. I was not getting one. Apart from that, it was okay, but I did not much notice or pay attention to grammatical range and accuracy part. And for pronunciation, I think you can tell me better. So your pronunciation is pretty good. Like there's no such word that I cannot understand from your speaking, and there's no such issue like fluency, and you are pretty fluent. Moreover, I have some I have noticed some errors in your grammar. Like you said, I have been shifted towards city. So this is a perfect, like present perfect tense. Instead, you should use a present, like there should not be a been used here. I don't know what the name of the tense is. You used I have been shifted. So this is something that you are still continuing, but you should say I have shifted towards city, right? You're not supposed to use been here, okay? And moreover, I have noticed that instead of saying had, you said have. One of them have in my contest, something like that. So these are some minor grammatical errors that if you pay attention, they're not something that you don't know the tense. Just in our intent, like we are trained in such a way that we don't pay attention to these little things that affect our grammar, like that affect our band really badly. So this is all from my side. Like otherwise you are pretty good in English. Your fluency, your lexical resources, and your pronunciation are good. So you have some grammatical errors, and if you work on these things, you are good to go. Yeah, I think if they are still persisting in my speaking, then I need to work on it, because even if you have good lexical source and your accuracy is not good, it means it can affect your overall score. So we need to focus on this part of area besides working on other aspects. So thank you for pointing it out. I will definitely work on it. If anyone has question, they may ask. Otherwise, we can just highlight some words from this topic which are related to childhood memory, which we have practiced in the beginning of the session. Yeah, that's it. I think there's only 1 minute left. We can highlight some words. I have highlighted some of them, but some are not, might be new for all of us. Lasting impression on my heart. So there are many things. I think this is, let's see what are the words. When we're talking about playing in our childhood, it means we can talk about outdoor games which we have played, indoor fun adventures. It is the one word which we can talk about it, and cherished memories. Anyone who would like to describe the meaning of cherished? Like something that we feel proud of, and we are happy to remember those memories. Yeah, yes, cherished memory, like we have now very good memories. So another thing what we use when we're talking about where we have gone, we can talk about the different park. As Sarasa mentioned, playground. So this is also one way we can use wonderful menus for outdoor activities. So instead of using this word again, outdoor game, they said outdoor activities. So children, excellent backdrop for countless hours. Anyone who would like to describe the meaning of backdrop? In this context, usually backdrop is a part in the, if we talk in the context of stage, it is the back part. But what you will describe in this context here? I think this is referring I to don't know. flashback. memories. Backdrop means the background. Yeah, it is telling about like
you are talking about your background, like you're talking about your past experience in childhood. So they're saying it was like in the past, it was countless hours of fun. So we can describe in that context. Urban living trends, like when we're talking about city or location, social interaction we might have done in the past. And then this is also the word we can use in childhood maybe context. Playful moments, this is very important word which we can use in the context of playing, celebrating holidays. Lasting impression on my heart, we can say that these memory have lasting impression on my heart. So we have just 1 minute. This is another form of enjoy, as period filled with exploration. So we can say exploration, learning, lasting memories. This is another word which we can use. Cherish is already highlight.